students, hope you all are fine. So today I welcome you all to Smile with English again. But before I begin the class, do subscribe my channel, share it and also like my channel. So today's topic, as you can see on screen, punctuation marks in English. So let's begin this class now. So what are punctuation marks? You can see only on screen, children, like exclamation point, question mark, period, there is a full stop, comma, quotation marks. These are all the punctuation marks that we find in while we are writing a sentence. So when we are writing a sentence, we always begin with a capital letter and we end it with either a full stop or a question mark, we know that. And there are different other punctuation marks also which we use when we write certain sentences. So now let's see one by one the uses of the punctuation marks. Next we put a question mark. तो क्वेश्चन मार्क भी द मेन कॉज ऑफ क्वेश्चन मार्क इज टू आस्क अ क्वेश्चन. जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एग्जाम्पल्स, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट टाइम इज इट. सो हियर ऑल्सो वी पुट अ क्वेश्चन मार्क. सो the main purpose of question mark is to ask a question. Full stop. So as you can see, this is a full stop. So when it is used at the end of a sentence. It is needed to divide up sentence so that we know where to pause. So whenever we are reading a sentence, whenever we have to pause, we just put a full stop in the sentence, है ना. तो जैसे एक सेंटेंस लिखा होता है, हम जब बिगिन करते हैं सेंटेंस को हम कैपिटल से बिगिन करते हैं एंड जब एंड होता है सेंटेंस का तो वी यूज़ अ फुल स्टॉप व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर. और जब भी कहीं पे पॉज मतलब कहीं पे स्टॉप करना होता है, कहीं पे रुकना होता है, तब हम ये फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. तो एग्जाम्पल में है जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. सो बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. तो जैसे गार्डन एंड हो गया हमारा सेंटेंस, तो आफ्टर गार्डन वी विल पुट अ फुल स्टॉप. नेक्स्ट, quotation marks. We use quotation marks to enclose a direct quotation, a person's exact words. जब कोई पर्सन डायरेक्टली आपको कुछ बात करता है तब हम ये कोटेशन में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किम सेड दिस कार इज मेकिंग अ फनी नॉइस. कोटेशन, इन कोटेशन वी आर राइटिंग दिस. व्हाई? बिकॉज किम इज सेइंग दिस एक्चुअल वर्ड. ये वर्ड्स एक्चुअली किम के मुंह से आ रहा है ना. ही इज एक्चुअली सेइंग द वर्ड, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अ कोटेशन मार्क. Then, maybe we should pull over, suggested Amy. So Amy is saying these words, the exact words of Amy. That's why we are putting this in quotation again. Okay. Next we see comma. So comma is used to separate in a list or series. Like Dad brought apples, comma, pears, comma, grapes and juicy plums, full stop. The dog stopped, barked loudly, comma, then ran away. तो जैसे कॉमा हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें सेपरेट करने में इजी हो. जैसे बहुत सी चीज़ें हैं तो हमें एक एक करके हम अगर इकट्ठे लिखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है ना समझने में. दैट्स वाई वी पुट अ कॉमा. लाइक डैड बॉट एप्पल्स के बाद कॉमा, पेयर्स के बाद कॉमा, ग्रेप्स एंड जूसी प्लम्स. सो यहाँ पे हम इकट्ठे नहीं लिख सकते ना. दैट्स वाई वी आर पुटिंग अ कॉमा. तो लाइक दैट ओनली द डॉग स्टॉप्ड, वहाँ पे एक कॉमा आएगा. बार्क्ड लाउडली, कॉमा, देन रैन अवे. नेक्स्ट, वन मोर यूज इज दैट टू मेक द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियर, सो दैट वी नो द मीनिंग वेरी क्लियरली. माइक सेड हिज सिस्टर इज वेरी सिक. हम ऐसे हमने बोल दिया पूरा सेंटेंस तो हमें कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब यहाँ पे कहाँ पे रुकना कहाँ पे. सो हियर वी विल ऑल्सो पुट अ पॉज, दैट इज अ कॉमा. माइक, कॉमा, सेड हिज सिस्टर, कॉमा, इज वेरी सिक, फुल स्टॉप. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट माइक इज सिक. क्योंकि जो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हमें पता चला कि माइक सेड हिज सिस्टर इज वेरी सिक. ठीक है, ये हम इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं. जब हम इसमें लिखेंगे माइक सेड हिज सिस्टर इज वेरी सिक, तो यहाँ पे हमें पता चला कि माइक इज सिक. ओके, वेयर वी नीड टू पॉज इन अ सेंटेंस, जहाँ पे हमें पॉज करनी है तो वहाँ पे भी हम कॉमा लगाते हैं. जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लिटिल रैबिट. सो वंस अपॉन अ टाइम, कॉमा, देयर वॉज अ लिटिल रैबिट, फुल स्टॉप. A long, comma, long time ago, comma, unicorns roamed the earth, full stop. तो यहाँ पे भी हम जैसे पॉज हमें करना है
तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं. Now we see using exclamation mark. Exclamation marks are used to show your expression. जैसे आप angry होते हो, you're showing your anger, you're showing your happiness, okay, you're showing your sadness, your joy, your surprise. You use an exclamation mark. So to show anger, like if I say I hate you, so I will put it in exclamation and also in quotation mark. Then to show joy, I will use like this. These flowers are so lovely. Then I will give this exclamation mark. To show surprise or excitement, जब आप surprise होते हो तब अब use करोगे ऐसे I can't believe that you came first. So it is a surprise, okay? Then to ask for help, you use it like please help me. Here you use exclamation mark again. We also often use exclamation marks after one word or after a short word like oh, like interjections जो होते हैं उसमें हम use करेंगे जैसे oh exclamation mark, then I am so disappointed, or wonderful exclamation mark, just what we needed. So these are all the different uses of exclamation marks. So next we see the use of apostrophe. So we use apostrophe to show the ownership. So in two ways we can see, that is singular possessives and plural possessives. So what are singular possessives? Singular possessive means when we show the ownership of a singular person. For example, the girl's balloon. So here girl is one. So here I will put the apostrophe after girl. That is girl apostrophe s balloon. So we see that the balloon belongs to one girl. Whereas in plural possessives we see that the girls' balloons, that means many girls, 3 girls are there. So these girls, the balloons belongs to more than one girl. So here I will put the apostrophe after s. In the same way, the ladybug's flower. So the ladybug, here one ladybug only is there. So the flower belongs to one ladybug only. So I will put the apostrophe after ladybug. Okay. Whereas the ladybug's flowers, here many ladybugs are there, 4. So the flower belongs to more than one ladybug. Okay, so after ladybugs we'll put the apostrophe over here. So this is the difference between the singular possessives and plural. Okay, so apostrophe is also used to show contraction of words. That is, you can use contractions to shorten a word. एक word को आप छोटा बना सकते हो by using apostrophe, by removing one or more than one letter, okay, and substituting an apostrophe in the same spot. For example, जैसे are not को हम कैसे लिखेंगे? aren't, aren apostrophe t, cannot, can apostrophe t, could not, could n apostrophe t, do not, it is don't, we say no, does not, doesn't, did not, didn't, he will, he apostrophe double l, he would, he apostrophe d, he apostrophe s, is not, is n apostrophe t, it is, so it's we say, okay, it apostrophe s, I am, I apostrophe m, I will, I apostrophe double l, I would, I apostrophe d, I have, I apostrophe ve, and she will, to she apostrophe double l. So students, these are the different types of punctuation marks that I have discussed so far. Hope you understood the topic on punctuation marks.